So today we are going to learn what is function and which are the different type of functions in PHP. Now in this code, you can see that we are writing one function by using a function keyword, and as I always, the function has parentheses rounded, uh, and after that this parenthesis shows the scope of that particular function. Okay. Now this particular function do not have any return type or any parameters, so it is a simple function without any parameter. Okay. This is a definition of a function and this is a function call. Okay. So these are the things that you have to understand. Function call, this is function definition. Okay. So, and this from 5th to 8th line, the definition has been given, and on the 10th line, we are calling that function. Okay, we'll try to execute this program. We'll get the output as the text. Okay, that is written into the code. Okay, so if I change any text and save this program, it will be reflected into the output. So from this script, we can understand how to define a function, that is from 5th to 8th line, and how to call a function. Okay. Now the important part is function keyword should be used to define the function, and that can be visible by the different color, that is in blue. Okay. Now next is a function with parameter. Okay. Here what we are doing, we are defining a function with a parameter, and for parameter we have to give a variable name. Okay, like $f name. Okay, here we are taking one parameter that can be passed while calling the function. On the 10th line, we can see that Pramod will be collected into f name, and that can be printed while this function call. We are calling this function multiple times. For this particular program, we are calling in the function 3 times. Okay. First time the value Pramod will be sent and it will be collected in f name, and in echo we are printing the value of f name with particular text. Okay. So if we want to execute this program, we'll get the output as okay. This is the dynamic text, and this go gray is permanent. Okay, because this name, all three names are collected one by one when we call that function. Okay? जब जब हम ये function call कर रहे हैं, तब तब one by one ये जो names है वो आगे आ रहे हैं. Next is multiple parameter. Okay, now in this program, what we are doing, we are sending more than one parameter, that is f name and year. Okay, so whenever we are passing the parameter, the collection of that value should be collected in the definition. What I'm trying to explain is, if we do not have any variable to collect the value, it can generate an error. For example, now we'll first execute this, then we'll try to see what error it generates. Okay, you can see that the name and year. Suppose I remove this parameter and try to execute this code, it will give us an error, undefined variable. Okay, because
हम जो वहां पे वेरिएबल को यूज करना चाह रहे हैं दैट इज ईयर। ओके, सपोज हम ईयर निकाल देते हैं, क्या आता है देखते हैं, एरर आता है या नहीं आता है। आई थिंक कुछ एरर नहीं आएगा। द रीजन इज दैट इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वो इंटरप्रिट कर लेता है और स्क्रिप्टिंग में वो 1 by 1 लाइन पे लेता है और हमें एरर नहीं देता है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग द एरर हियर। बट you can see that even though we are passing the value, it is not going to be collect in the variable. Okay? So that can be a advantage of PHP, that it is not showing an error, but we cannot use that value as we are not declaring it in the definition of the function. Okay, so this is the output. Now next is default value. Okay, default value, while we are passing the values to a function. Now here you can see that we are calling this function 4 times. Okay, first time we are passing 350, next time we are not passing any value, third time and fourth time we are passing different value. Now what is mean by default value? If सर क्लिक करने का ले ले। okay, okay, are you able to see this or not? Yes, sir. Hello, screen दिसते का तुम्हाला? No, sir. Okay. Now Yes, sir. what we are doing is we are trying to understand the default value or default parameter value. Okay, in the first function call we are sending the value 350 that will be collected into $min height. Okay, it is not us going to assign the 50 value because we are passing some value, so it is get suppressed. Okay, so mean height will be collecting the value 350 and that 350 will be displayed here. The height is 350. Now in the next call we are not passing any value. So as we are not passing any value, हम कुछ भी value उसको pass नहीं कर रहे, तो वो क्या करेगा, जो default value दिया है 50 वो assign करेगा और वो message में echo में वहां पे display कर देगा, because हमने वहां पे क्या दिया है, default value दिया है. Okay, next time we are passing two different values, so it will suppress the 50 value. And are you able to see the screen? Hello? No, sir. Okay, the connection was lost. Okay, we'll see the output of this particular program. Okay, as we can see that first time we are passing 350, so it is going display. Next time we are not passing any value, that's why it is taking by default value, that is 50. Next two times 135 and 80. So this is this PHP script to understand the default value that can be sent to a script, okay, or a function. Now next is a simple function with two values and returning a value. Okay, now returning a value means what? जहां से भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां पे अगर हम फंक्शन के डेफिनेशन में हम रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं एट द लास्ट, वो क्या होता है, जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं वो वैल्यू फंक्शन कॉल के वहां पे आके रिप्लेस हो जाती है. अभी इस प्रोग्राम में क्या होगा, echo 5 plus 10 and we are calling this function sum 5 and 10. So this will call the function and 5 will be collected into x and 10 will be collected into y. In the function we are making addition or summation of these two value and storing this value into z variable, and we are using at the last, that is return $z. So what it will do, it will return this addition to this function call, and this function call will be replaced by the value that is sent by the
फंक्शन मींस 5 और 10 की एडिशन 15 हो गई, तो इस फंक्शन कॉल की जगह क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, 5 + 10 = 15. Similar is going to happen with the 7, 13 and 2, 4. Okay, you see the output. देखो 5, 10 क्या हुआ यहाँ पे, ये जो फंक्शन कॉल हमने किया है ये यहाँ से वैल्यू पास करेगा और रिटर्न होके जो भी 15 वैल्यू है वो इसको रिप्लेस कर दी, इस वजह से ही हमको यहाँ पे देखने को मिला 5 + 10 = 15. So this will be happen with all three function call. Now next and important part is reference. First of all, I will execute this program and afterwards I'll explain. Now you can see here the important thing is we are defining a function add some extra and we are using ampersand, not only dollar. Ampersand means the reference of that variable will be sent here and whatever changes can be made in the parameter that will be reflected into a function call. यानी इसका मतलब क्या है, यहां से जब मैं फंक्शन को कॉल करूं, देखो $str में क्या है, दिस इज अ स्ट्रिंग, इतना ही लिखा है, लेकिन मैं यहाँ से वेरिएबल पास कर रहा हूं और ये वेरिएबल पास करते वक्त मैंने कलेक्शन में लिखा है एम्परसेंड, मींस इसका रेफरेंस वहां पे कलेक्ट होगा, और अगर रेफरेंस को हम कलेक्ट करते हैं तो रेफरेंस के अंदर अगर हम जो भी चेंज करते हैं वो चेंज कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जहां पे हमने वैल्यूज को पास किया है वहां पर. मैं आपको डेमो बताऊंगा कि रेफरेंस और सिंपल पासिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक, अभी देखो ये जो फंक्शन हमने कॉल किया है रेफरेंस के थ्रू कॉल किया है, इस वजह से हम यहाँ पे $string डॉट इक्वल टू मींस ये कॉन्केटिनेट कर रहा है, कॉन्केटिनेशन मींस इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा है उसको कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, यानी दिस इज अ स्ट्रिंग और उसके आगे एंड समथिंग एक्स्ट्रा जॉइंट हो जाएगा. अभी यहाँ पे हमने एम्परसेंड लिखा है, इसी वजह से वो आउटपुट में दिखा रहा है एंड समथिंग एक्स्ट्रा. अगर हम ये एम्परसेंड निकाल देंगे तो हम देखते हैं क्या होता है, हमें सिर्फ इतना ही देखने को मिला है, बिकॉज we are not using the reference of that value or variable. अगर हम रेफरेंस यूज करते हैं तभी वहां पे जो फंक्शन के अंदर हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं. रेगुलर अगर हम करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, जब हम एम्परसेंड यूज करेंगे तभी वो क्या होंगे, वहां पे रिफ्लेक्ट होंगे. So this is what similarity or C++ calling a function by value and calling a function by reference.